What's the market of 1990s and what's the market of 2020s? The long term, as we all knew it, is dead. When cycles become shorter and shorter because of invasion of technology, all cycles get compressed. An algo cycle runs for seconds or minutes. That's good enough because I'm putting 100 crores on it. But here people are mistaking that a man with 2 lakhs and 5 lakhs can run an algo. It's not going to happen because those iterations will have 100 stop losses also. So people are just getting caught in this loop of their own making. पहले तो जो आदमी नया ज्वाइन करता है, so how much time do you think, whether it's a 20-year-old or a 45-year-old, that basic stage should go like? You can educate the ignorant, but it is very difficult to re-educate the miseducated. एक साल में सीख जाएगा, 2 साल लगेगा, इसका आंसर नहीं है. वो कितना टाइम में उसका मिस एजुकेशन को छोड़ने को तैयार हो गया और ये विलिंगनेस दिखा दिया कि आई हैव टू गेट री एजुकेटेड. बस वो 3 महीने में भी हो जाए. What would you say could be the reason for women turning out to be better traders? Women are intuitively much more stronger. मेरे हिसाब से कोई स्टूडेंट स्कूल में कुछ नहीं सीखा. एसएससी भी पास हो गया लेकिन सीखा तो कुछ नहीं. मैंने एक अभी रिसेंट पॉडकास्ट में लास्ट ईयर किधर तो बोल दिया कि इक्विनॉक्स के दिन पे मार्केट घूमेगा एंड इट वाज रिलीज्ड इन जुलाई. टिल 2-3 months पीपल वर ट्रोलिंग, सर अभी आप तो एस्ट्रो में घुस गए हो, एंड देन कम्स इक्विनॉक्स एंड देन द मार्केट टर्न्स डाउन. Everything in our life is ruled by time. Anything which intends astronomical activity will have an impact in the market. अब तो सही बोले वो दिन. अभी अगला इक्विनॉक्स कभी है? Hey guys, this is Vishal and welcome to the Wealth and Beyond podcast. Wealth and Beyond podcast में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट. मेरे और मेघना के सबसे पहले टेक्निकल गुरु वो है डॉक्टर सीके नारायण, जिनका पहला टेक्निकल कोर्स मैंने किया था 2002 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई टेक्निकल एनालिसिस में. सो जो मेरा बेस है अबाउट प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, ये बेस उनसे ही बनाया और फिर ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा और समझा. बट मुझे लगता है कि जितना उनको नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इंडिया में, मुझे नहीं लगता है किसी के पास है और उनका एक्सपीरियंस अभी 40 साल के ऊपर है. तो ये जो पॉडकास्ट है ये आप इसको ऐसे एक कोर्स, ऐसे एक मास्टर क्लास समझ के समझो, एक वर्कशॉप की तरह समझो. एक नोट पेन पेपर लेके बैठो और पूरा जितने भी इसमें नगेट्स है, जितने भी इसमें पॉइंट्स है आपको लिखना चाहिए. और अगर बेटर यूज करना है, यू कैन इवन यूज 1.5 स्पीड पे आप देख सकते हो इसको. और मुझे नीचे कमेंट में बताना कि क्या सबसे बेस्ट आहा मोमेंट या बेस्ट लेसन आपने सीखा था इस पॉडकास्ट में. तो चलिए शुरू करते हैं द वेल्थ एंड बियॉन्ड शो विद डॉक्टर सीके नारायण. Thank you so much for joining us for Wealth and Beyond show. We are so glad that you are part of it because you have been entirely. Yes, you have been instrumental in our journey as market traders or analysts or as a trainer also. And again, thank you so much for writing the foreword for our book also. So let's start with some basic question. We'll put it Hindi, English both. Ki how do you see market changing? You have been there since last 40 plus years. What's the market of 1990s and what's the market of 2020s? What's the difference? Like, what do you see as a main difference in the way markets have evolved? I think it's better to put it this way that do we still have any similarity? Oh, is it? Because that is the extent to which it has changed. Back in the 70s, late 70s and 80s, you said 90s, but I'm going a little further back also. It was a country club, right? That is what it was. Where a few set of people ruled the roost and hardly anybody knew what was going on, and there was this badla trading, if you recall. Yes. Which was there and which was the dominant thing. And there was one set who would finance the badla. It's typically Marwadi brokers and that set who never traded a buck in their life, but they made all their money from the interests. And the interest rate back then used to be 3, 4, 5, 6, 7% Per month. per month. And then there were all these, for want of a better word, I'm saying gentlemen, who believed that paying that sort of, and that group included me also, who believed that paying such high rates of interest, we could still make money. And you also had to remember that this was the time when brokerage rates were 2% and 3%. If you are an out-of-towner, you paid 4% brokerage. And this was all
This is all manual, so I'm not counting into this mix the spreads, which were humongous. And the spreads were dictated by whether that stocks market was made by one person or many. If a single person made the market, he could quote whatever buy-sell difference he wanted. Right. So you add that to the mix. And then you add further into the mix that brokers, sub-brokers used to levy their own cuts, pad the price or drop the price of the confirmation. So you can just imagine, just tot all this up and you realize that the odds were almost completely against anybody who was trading. And it were totally stacked in favor of those who were financing this business. And that is how a lot of brokers became so phenomenally wealthy in the course of the next, let's say, 20 years or until the time of 1995 when you got into screen-based trading. Now, screen-based trading was the game changer, right? Because it kind of absolutely destroyed all these lacunas which were in existence. The brokerage rates didn't fall immediately. The brokerage rates were still ruling around 2% and all that. But this Badla system was dropped, so straight away you were saving several percentage points in your trade. And then because the trade was on the screen and transparent and could not be fudged, what we used to call as the gala, the gala went away. Now that also saved you lot of money. The bid-ask spread dropped, right? And all this made for tremendous changes. And that's how trading really took off. So if you must talk about the trading market, if you must talk about a birth of a new stock trading system, I would say 95 was really the birth of the stock market as you know of it today. And what has happened through the past 20 years or so is that every aspect of this new system has just become better and better. So everything has dropped, the brokerage rates have dropped down to the basement, right? And today finance companies are into financing, so the rates are in and around what is the normal bank lending rate. Okay, if you can get 12% from the bank, at most you will pay 15% in the market per annum. Yeah. And I am comparing this to 6% per month, right? So that is available freely, so the cost of doing business has dropped considerably. The bid ask, which used to be a bugbear of tremendous dimension, has now dropped to negligible. It's 5 paisa, right? The spread, or even 1 paisa in smaller stocks and all that, and that's a huge boon. The disparity that used to exist between non-Mumbai based brokers or people wanting to do business from outside Mumbai, or maybe say Calcutta and Delhi to some extent, but Mumbai was the big daddy of it all. That has gone away. That age symmetry has totally disappeared. So that is why I said at the start, please ask me whether there are any similarities anymore. The fact of the matter is there is no similarity to what was being done in the 80s and 90s and to what is being done now. And the way things are progressing now, give it 10 more years and you will start, probably speaking about 2010 era as the way we are speaking about the 1980s and 90s. So rapid changes, I think, which are inevitable. In short, what we can say that those galas and those spreads is what now we consider as a living for many people. Yeah. That's within that people make money. Within 10% of that, not even, 5 rupees used to be the gala, now you are fighting for 50 paisa and making a living out of it.
So this is about how the markets have changed over a period of time from those days to now. How about as a technical analyst, I would ask you this question: how about trends? Are they changing, or are the same thing repeating again and again? See, when you talk about trends, then you're talking about a larger topic. Trends are what? Trends are extended cycles. If you really see it. So market is either trended or cyclical. So if you take that all human activity is cyclical, and that is what is getting reflected in the markets also, in human behavior also, then human behavior has to be cyclical, and ergo the markets also have to be cyclical. So bull market, bull phase, bear market, bear phase, what are they? They have cycles of time. But a trend is actually an extension of a cycle. A cycle, we understand something which happens at a certain periodicity, and we say, okay, 10-day cycle, 200-day cycle, and so on and so forth. And that cycles as a study is the backbone of technical analysis. If you really see it from there, technical analysis is really a study of cycles using different kinds of tool sets. Right. So where you are looking at expansion of the cycle and calling it a trend. Now Dow might have given it a shape, and that shape still stands today unchanged, 200 years after that has been introduced. The higher top, higher bottom, and the lower top, lower bottom still rules. You can't get away from that. What is changing, or what will kind of continue to change, is the length of the cycle. Now the length of the cycle used to be very long, which is what gave birth to this buy and hold concept. And people swore by buy and hold, people swore by long-term investing because it worked. And because cycles played out over extensive period of time. Why did that happen? It happened because of asymmetry of information. The point of origin of the information, kind of percolating down slowly to the man on the street who is trading, or man on the floor who is trading. It had no laid down symmetry to it, meaning it could take you 1 year to get it, or it could come in a month or a week and all that, but it would never reach you the next moment. Not until recent time that it is reaching you the next moment. Right. Information age symmetry is what led to the ubiquitous khabar. Otherwise there is no definition of a khabar. What is it? It is inside info. Inside info of what? Inside info of events. And what are events? Events are something which play out through time. So this is the big change which has been happening slowly and progressively. So what has really happened to trends is that now, because of technology, and because through technology and advancement which is happening every day in our lives, the information asymmetry part is now almost completely destroyed. You have 24-hour TV channels, you have 24-hour WhatsApp and Telegram and all that, and you have everything which is running 24 hours. So the origin of that information to the time gap, the delta between the time of origin and the time it reaches you, has now got crunched to such a severe extent that trends of the past that we have read in H.M. Gartley's book or Shabaker's book and all that, where you had this beautifully expressed long-term trend, medium-term trend, short-term trend and all that, those time aspects of those trends have got completely redefined. Alongside people keeping pace with these changing times have also been, even though you have learned that the long-term trend as defined under the Dow theory is 12 months and more. Now you tell me, where do you find a guy who's talking about 12 months and more? There are people who are saying 3 years, 5 years and all that. But let the stock go up 4% tomorrow or the day after, and where is that man to be found? No longer. That's because over a period of time, this thing has got crunched so much that instant gratification, which we have all read as being two bad words, under market psychology, we have read that instant gratification is the biggest enemy. But instant gratification has become the norm. So when that is the norm,
where is the question of believing in the long-term trend? Because I need this now, it's a fix. And then I need the fix now means I need it now. And all systems have changed or modified themselves around this aspect, enabling you to participate in shorter and shorter and shorter durations. And this algo world which we have all entered into now, it's just making this problem even more acute. As a result of which the original concept that market takes time for accumulation, Stan Weinstein's book which says that, okay, stage 1, stage 2, stage 3, they've all receded into the background because stage 1 happens before you can even notice it. And then stage 2 happens because some algo gets into it. And before you realize that stage 2 is there, okay, I can participate in it and make some money, a second algo gets into it and makes it a stage 3 because that 0.25% or 1% gain which that algo is aiming for is fulfilled. And theoretically, see, Weinstein's 3 stage is met. But in actual practice, can people move at that pace? Eventually they will have to, because that is where the market is headed. So I will make a controversial sounding statement, which is that the long term is dead. Okay? Long term is dead. I mean the long term as many of us know it, particularly old timers. The very, very strong belief that valuation drives prices. Now I am going to raise the heckles of a lot of people who may be listening to this, but this is what I truly believe, so I am saying it out. The long term on which everybody is working, that's just, withering away. Because the pace at which things are happening, you can no longer think about valuation remaining constant and then playing out across a long period of time, which allows the trend to flower and then gives you those multi-baggers and all of that, and which is the dream stuff for a lot of people. Those are not going to happen except in some stray cases. And what are those stray cases? We'll discuss when we come up with more things. But accepting that, the long term as we all knew it is dead. When cycles become shorter and shorter because of advent and invasion of technology, all cycles get compressed. What is an algo cycle? You tell me what's an algo cycle? An algo cycle runs for seconds or minutes. It's just the reiteration of the cycle some 1,000 times, which is actually what may be producing the minuscule amount of money, but collectively that happens to produce for you 1% or 0.5% per day, and okay, that's good enough because I'm putting 100 crores on it. So then it is meaningful money. But here people are mistaking that to think that a man with 2 lakhs and 5 lakhs can run an algo. It's not going to happen because those iterations will have 100 stop losses also. If you're not funded for that, you're going to blow up. And what is your final conclusion then? Oh, this short-term thing doesn't work. And then, oh, we need to go back to the long term. And then he goes back to the long term and that doesn't work either. And so people are just getting caught in this loop of their own making. Wow. So a stalwart like you who's seen the whole, the whole journey from there till here, where long term was so relevant to now it's become so obsolete. How does that make you feel? What do you feel currently, and how has that affected your thing? It's not anything to feel, it's a reality, right? So you have to just accept it. If you don't, you're going to be a statistic. So you accept it and you either develop the skill to deal with that, or you hire a guy who has the necessary skills, give it to him and let him run the show, and you reset your mind that, boss, I cannot be in and out of the market, this trading business is not so good, and everybody says that you can't time the market. What is algo? If it is not timing the market, what is it doing? And today, why is 55-60% of the market doing algos? And what are they doing? If 60% of the market all across the world
are only timing the market. You may call it this algo, that algo, strategy algo, execution algo, or a text algo, or whatever you call it. That ultimately that is what you are doing. You are just timing it into one particular methodology, Right. but you are running that iteration 1,000 times or more at a second slice or a microsecond slice or whatever slices they are coming up with every day. So all those concepts are going to change. It is just that how deterred you feel by wanting to adopt it, or how abhorrent that very suggestion is to you because you are so steeped in the ways of the past. That is the the gamut. How quickly you can adopt yourself to do. If I may add some more on that, why is it so difficult? Why should people not adopt it when they are seeing it as a reality? It's mainly because when the cycles get crunched, events start happening at a faster frequency, right? So you got overbought to oversold in a flash, and then oversold back to overbought, and then you got breakouts which fail and breakouts which form higher bottoms and then succeed, and so many varieties of that. And each of these is demanding a decision from you, Yes. and therein lies the difficulty. People who are unable to make decisions, inherently, because they like that slow, decisive kind of approach, they are being left behind in this market. And the ones who have adapted themselves to making quick decisions, this is one of the reasons why people eschew trading itself, because you are called upon to make many decisions. So they invented swing trading and they invented positional trading. Only for this one reason, that I don't have to take so many decisions. But the fact of the matter is, trading, investing, long pull, medium and all that, it's about how many decisions you are called upon to make. So as we go more and more into this world which is being dominated by, let's say, the machines, they have now surrendered the decision making process to the machine. हमसे नहीं होगा इतना. It's not possible for me to do this. तो let the machine take over. तो machine take over हो गया तो 4 PhD लोग खड़े हो गए to do that part, so that the decision making process gets converted into a formula or into a process of iteration. So that's how we are all changing everything. So everything that we held true, 40 years ago, 30 years ago, 20 years ago, they're all coming in. So we keep talking about this word disruption. Disruption is happening big time in analysis. Whether it's fundamental analysis or technical analysis, it's big time. You know where it is not going to get disrupted? In astrology. Because the planetary cycle are not going to get disrupted. I'm not advocating that, because that's a separate subject by itself, but I am a believer, complete believer, but I don't have the luxury of having learnt it. Yeah, so let's now switch to like Hindi also, and also to the common man. So हमारी चैनल जो है एक आम आदमी को ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाने की कोशिश कर रही है. मेरे पास ये 3 स्टेजेस है एज अ ट्रेडर. आप यू हैव गॉन थ्रू दैट, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू, एवरीबडी हैज़ गॉन. इज़ दैट पहला स्टेज है जो स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस होगा कि मैं बिल्कुल नया हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मुझे क्या अप्रोच रखना चाहिए टेक्निकली, और मुझे क्या अप्रोच रखना चाहिए माइंडसेट वाइज. एंड देन कम्स द सेकंड स्टेज विच इज़ मैं ऑलरेडी हूँ 3-4 साल से कर रहा हूँ ठीक ठाक, लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्रिप नहीं आ रहा है, मैं ऊपर नीचे वहीं पे गोल गोल घूम के, विच अगेन आई एम श्योर वी बोथ हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज. एंड द थर्ड स्टेज इज वेयर यू आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एंड यू आर मेकिंग कंसिस्टेंट मनी, मतलब आप पैसा बना रहे हो बट उसको स्केल अप नहीं कर पा रहे हो, एक लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है. सो 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 पे टेक्निकली या मार्केट वाइज क्या होना चाहिए और माइंडसेट वाइज क्या होना चाहिए, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेज 1. जो बिल्कुल नया है, जो पॉडकास्ट देख रहा है, उसको शुरू करना है स्टॉक मार्केट में, वो चार्ट्स को कैसे देखे या टेक्निकल एनालिसिस को क्या अप्रोच करे और क्या उसको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. सी, ये जो सवाल है आपका, दिस इज ऑलमोस्ट पैरेललिंग लाइफ. ठीक है, वी गो टू स्कूल, राइट. स्कूल में क्या सीखा किसी ने? मेरे हिसाब से कोई स्टूडेंट स्कूल में कुछ नहीं सीखा. एसएससी भी पास हो गया, लेकिन सीखा तो कुछ नहीं. बट एक चीज़ जरूर होता है, एक्सपोजर. ही गेट्स एक्सपोज टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स,
he gets exposed to life outside the house. He gets exposed to people. He gets exposed to systems. तो ये सारे एक्सपोजर का स्टेज है. तो जैसे आप बोल रहे हैं कि बिगिनर को क्या करना चाहिए, बिगिनर को एक्सपोजर लेना है कि ये मार्केट क्या चीज़ है, ये बाइंग सेलिंग है, दैट इज द रूट ऑफ इट, या सिर्फ वही है, बट ये बाइंग सेलिंग के पीछे क्या है. सो देन वी हैव नाउ ऑल कोर्सेज कि भाई व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, सेटलमेंट क्या है, मार्जिन्स क्या है, ये सब एक काइंड ऑफ एक्सपोजर हो गया. दूसरा है कि भाई मुझे ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है. तो ये तो बहुत सारे इमेजेस आपको होता है एक्सपोज. आपकी ट्रेडर से मुलाकात हो गई सबसे पहले, तो आपका एक्सपोजर ट्रेडिंग की तरफ हो गया. आपको इन्वेस्टर से मुलाकात हो गया तो आपकी एक्सपोजर इन्वेस्टर का हो गया. अधिकतर लोग, बिकॉज देर आर सो मेनी मोर ऑफ देम, अधिकतर लोग का एक्सपोजर इन्वेस्टर से होता है. तो इन्वेस्टर का एक ही सॉन्ग होता है कि इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, डोंट बी इन अ हरी. ये वो लाइफ में भी सिखाया जाता है कि मनी इज नॉट मेड ओवरनाइट. राइट. बट मार्केट का ये खूबी है कि इट टेयर्स अपाउट ऑल दीज कंसिडरेशंस, स्पेशली अबाउट टू थिंग्स. वन इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड द एफर्ट. Everybody says if you make effort, you will make money. If you give it enough time, you will make money. Fact है. But market में ये rule बहुत lopsided है. Because you can make several lakhs of rupees in one day with just one phone call. Where is the effort? Where is the time? You can butt your head against the market for a year, trying out all kinds of methods, and still end up with losses. So you made lots of efforts, you gave it a lot of time, but you're still in the red. And here is your neighbor who made a call and he made a couple of lakhs. So it's so lopsided that it's very difficult to wrap your head around it. So life में क्या सिखाया जाता है, और what is the correct way in what I have learned is that you come out of college and all 17, 18 thereabouts. वहीं से तो तुम्हारा real learning वहीं से तो शुरू होता है ना, तब तक तो you are coasting. So in your 20s, you must expose yourself to everything. You should not decide कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ये इंजीनियर, सुपर स्पेशलिस्ट, ये वो सब एक इमेज which are all given to you and various other factors. But really speaking, somebody in their 20s should get exposed to everything, so that he comes to know कि यार मेरी रुचि की आइटम क्या है, मैं कौन सा काम ठीक से कर सकता हूँ, एंड उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये सब जानकारी आपको लेना है. सो इन एग्जैक्टली द सेम वे, जो नया खिलाड़ी है मार्केट का, उसको सबसे पहला तो मार्केट क्या है, उसकी सराउंडिंग, इर्द गिर्द क्या चीज़ होता है, ये व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक टर्म्स पढ़ना चाहिए कि नहीं. आजकल तो पढ़ने का आदत तो सबको छूट ही गया है, बट इकोनॉमिक टाइम्स आज भी पब्लिश होता है, उसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन आती है विच इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू पीपल हु स्पेंड द टाइम. आजकल सब व्हाट्सएप वाले हो गए, तो ठीक है, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ से आपको वैल्यू मिले, जहाँ से आपको टिप्स मिले, वो ग्रुप में मत जाओ. जहाँ से आपको वैल्यू मिले वो ग्रुप ढूंढो, वो टेलीग्राम चैनल ढूंढो, वो यूट्यूब के वीडियो देखो, कीपिंग इन पेस विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन नाउ. सो एक्सपोज योर सेल्फ टू एवरीथिंग so that you get an understanding of what is going on, what do I want to do, what do I need to do which will make things happen for me, and what all are the support things that I need. ये करते करते आपका समझो 26, 27, 28 साल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. It is the impatience with the earning part which prevents people from doing this. अभी लाइफ में when you get employed and all that, your life really starts after the 30s. 20s में तो मजा ही कर रहे हैं आप अभी तक. 30s में you get married, you get a steady job, you earn some money, your parents have become older, थोड़े responsibilities आ जाते हैं, then you get a couple of kids, वो हो जाता है, and you rise up in position in your office, more stuff, so your life starts getting crowded. If you have not worked it out well in your 20s and you have not
learned what I want to do and learned it well, your responsibility in the 30s is to do what you have learned and do it extremely well. So that all these other things which are going to crowd your life later, they all get taken care of. So markets में exactly वही है कि आप ये जो सीख शुरुआत में कर लेंगे आप ठीक से with a solidity which is required, and then you start applying it in the second stage which you described, that second stage will go so much more smoothly. And when it goes smoothly, it sets up that positive loop in your mind itself. In your teens and your early 20s, if you tell somebody that you got to work on your mind, no one is going to take you seriously. Our whole life is structured where they say, after 60, vanaprastha. Why after 60? 60 के बाद ही आपको सीखना चाहिए क्या about the good books? The good books are available here, and if you spend time and if you get a good teacher, in your 20s you can be educated about good values. You don't have to wait till 60s to learn values, right? So it's absolutely paralleling the way life should be created and led. So you learn it very well early enough. When I say 20s, you don't have to wait till your 30th birthday to start doing something. Sooner you learn it, the better it is. And then you learn it so well that you can apply it, so that the second stage goes rather smoothly, and like you said, the third stage where you get established, that happens quickly. You will, if you look around you in life, you will find that the very, very successful people create their success by the time they are 40, 45. You know, the really successful people, you may have somebody जो बोलते हैं नहीं देखो ये क्या नाम KFC के जो फाउंडर थे, जो अपने मैकडोनल्ड्स के फाउंडर थे, वो 55 साल में शुरू किए और ये वर्ल्ड एम्पायर बना लिए वो लोग, नहीं, ये सब ठीक है, ये सब एक्सेप्शन है. बट बल्क ऑफ द पीपल, आप इफ़ यू सी देम, उनका सक्सेस स्टोरी जो होता है ना, वो करीबन 45 साल तक हो जाता है. तो ये 30 से लेके 45 का जो ब्रैकेट है, ये आपका फाउंडेशन पीरियड है टू रियली गेट सेट, एंड देन यू रीच दैट लेवल जहाँ पे अभी आपके पास नॉलेज है, आपने थोड़ा वेल्थ बिल्ड कर लिया, आपके पास तजुर्बा आ गया, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब हो गए, अभी आपको क्लियर जानकारी है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड. ये सब चीज़ की आपको क्लैरिटी है. ये जो स्केलिंग अप जो है ना, उसके बाद ही आ सकता है. अनलेस यू आर अ मैन ऑफ तकदीर एंड you get struck by some bolt of good fortune and all that, that's a different issue. I'm talking about the normal guy progress. तो यही पैरेलल है मार्केट में भी. समय दो, सीखो उसके साथ साथ, बट बेसिक्स को पहला सीख लो पूरी तरह से, उसको अप्लाई करो अच्छी तरह से, द वे इट शुड बी अप्लाइड. डोंट गो चेजिंग ऑफ आफ्टर द लेटेस्ट इन्वेंशन. तो आपका भी सही है, गो डीप, don't go broad. Yes. I think that's you are stating the same thing that I am saying in so many words. आपने एक लाइन में बोल दिया. Going broad is good, but do it in your 20s. In your 30s you go deep. Right. तो आपके पास वो broad का भी आ गया और deep का भी आ गया. अभी आप पहुंच गए एक स्टेज पे जहाँ से आप स्केल अप करो, और स्केलिंग अप हो जाएगा आपको without too much effort. So I have this extended question is, you know what, that आप जो बताते हो ना कि बेसिक्स पे ध्यान दो और उसको स्ट्रॉन्ग करो. तो पहले तो जो आदमी नया ज्वाइन करता है, यू स्पोक अबाउट लाइफ विच इज़ 20s 30s एंड 40s, बट फॉर एग्जांपल कि कोई एक 45-year-old है जो एस्टेब्लिश्ड इन अदर फील्ड, बी अ डॉक्टर, बट नाउ ही स्टार्ट्स इन स्टॉक मार्केट. तो व्हाट आई फील देयर इज अ चैलेंज विच कम्स इज बिकॉज यू आर सक्सेसफुल एट वन लेवल इन वन फील्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कि वो नीचे से स्टार्ट करे. उनको लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं, या इंजीनियर हूँ, जो भी XYZ, कि मैं इसको जल्दी पकड़ लूँगा, बट इट्स अ न्यू प्रोफेशन.
So how much time do you think, whether it's a 20-year-old or a 45-year-old, that basic stage should go? Like if he even gives like, let's say 2 hours a day, what kind of time he should give? 1 year, 2 year, one? And second, मुझे काफ़ी लोग स्टूडेंट आते हैं, सर मेरे को बेसिक आता है और मेरे को एडवांस सिखाओ. मतलब तेरा बेसिक और मेरे बेसिक में बहुत फ़र्क है. What do you mean by basic? That let's make it that clear. तो आई विल नॉट गिव यू द आंसर इन द सीक्वेंस दैट यू आस्क्ड. आपका लास्ट पार्ट मैं लेता हूँ. आपको याद होगा जब भी बीएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप मिले थे मेरे से, यू आर डूइंग द कोर्स, तो तभी एक डिमांड आई कि एक एडवांस कोर्स करो. तो मैंने कहा ठीक है, एडवांस कोर्स वी विल डू. सो आई डिज़ाइन वन एडवांस कोर्स. बट मैंने कहा कि एडवांस कोर्स में जो आएगा उसको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, बिकॉज द सेम थिंग यूज टू कम. आई नो एडवांस, आई मीन आई नो बेसिक्स. मैं डायरेक्टली एडवांस में भर्ती होना चाहता हूँ. तो मैंने कहा एक, एंड आई डिड नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, इट वॉज रीजनेबली सिंपल. एक एंट्रेंस टेस्ट लगाया. कुछ मेरे ख्याल में 50-55 लोग, एज फार एज आई रिमेंबर, दिस इज आई एम टॉकिंग 95, ये एग्ज़ाम लिखे. विशाल ने भी लिखा. तो गिन के 6 आदमी को मैंने पास कराया. ही वॉज वन ऑफ देम. 6 आदमी को मैंने किया पास. मैं लास्ट में गिन रहा हूँ, ओनली 6 पीपल हैव क्लियर दैट एग्जाम. तो बीएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इट वाज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल दे सेड बहुत 6 आदमी रख के तो हम कोर्स नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करो एक बार रीवैल्यूएशन कर दो. तो मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड को कम करा के रीवैल्यूएशन कराया और ग्रेस मार्क्स भी दिया. 80-80 वाले भी आ गए उसके अंदर. सारे आ करके फिर कैसे भी करके हमने कुछ 15-20 जन का बैच बनाया था. सो ये अभी की मेलोडी नहीं है, ये शुरू से ही मेलोडी है. सब लोग सोचते हैं कि दे नो द बेसिक. अभी इसका एक पैरेलल उदाहरण मैं आपको देता हूँ. आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, हाउ गुड आर यू एट ड्राइविंग? Pretty good, yeah. मतलब yeah, बराबर ने ये आंसर हर आदमी देगा. right. कोई भी जो गाड़ी खरीदा हुआ है और ड्राइव करता है, एक आदमी बोलने वाला नहीं है कि मैं खराब ड्राइवर हूँ. नोबडी. वो थोड़ा शर्मिंदगी है तो वो बोलेगा एवरेज हूँ, यू नो, बट नोबडी इज बिलो एवरेज. नोबडी इज गोइंग टू से आई एम नॉट इवन एन एवरेज ड्राइवर. तो अभी सब लोग अबव एवरेज है, तो नीचे कौन है? नीचे तो कोई नहीं है ना, तो एक एवरेज बनाने के लिए. सो एवरीबडी ओवर एस्टिमेट देयर एबिलिटी टू डू द नॉर्मल थिंग और द विजिबल थिंग. तो दैट ऑल्सो परकोलेट्स हियर. और ये क्यों इसमें परकोलेट होता है? क्योंकि इसमें तो दिखता ही नहीं है ना कोई एफर्ट है. अब आप एक ट्रेडर के सामने कैमरा रख दो, आपके रूम में है बैठे हुए 6-7 जन, मैंने देखा, कैमरा रख दो उनके सामने, पूरे दिन का उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करो. दे विल बी मूविंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 minutes टू रीच फॉर द माउस एंड क्लिक buy and sell. You're not capturing their technical analysis work. You're capturing their trading work. In a matter of 6.5 hours or whatever, they will move for 10 minutes to click buy 3 times and to click sell 3 times. अब जो ट्रेडर के बगल में खड़ा है वो भी तो यही देखता है, बोले ये तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा किया और रुपया आ गया या रुपया चले गया. तो ये सबलिमिनल इमेज बन जाता है कि यार ये ट्रेडिंग में तो कोई काम ही नहीं है. अच्छा, अभी मैं हमेशा एवरेज के ऊपर ही खुद के बारे में सोचता हूँ इन एनी एरिया ऑफ लाइफ. अब तुम सामने मेरे सामने पीएचडी बैठे हो तो मैं बोलेगा ठीक है ये एक्सेप्शन है, बट ये सब जो लोग हैं वो मेरे लेवल के ही. जब आप कुछ नहीं करते हुए रुपया बना रहे हो, एंड आई डोंट थिंक माई सेल्फ इन एनी वे इन्फीरियर टू यू, तो मुझे भी लगता है आप जो काम कर रहे हैं मैं कर सकता हूँ. इसीलिए ये एकदम डोमिनेंट इमेज है कि आई कैन डू इट. इसीलिए ये भी है कि इस लाइन में एंट्री बैरियर नहीं है, और वाकई कोई एंट्री बैरियर नहीं है. एनीबडी कैन कम, और इसमें कोई भी बिजनेस भी सेटअप कर सकता है, ट्रेडर भी बन सकता है. एनालिस्ट करने के लिए चलो थोड़ा बहुत सीख लेना पड़ता है, बट लैक ऑफ एंट्री बैरियर
lack of any visible effort, leading and combined with this belief that मैं एवरेज हूँ या एवरेज से बेटर हूँ, और ये सामने जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, I am no less than them. I know who is better than me. क्लास में था तो वो फर्स्ट रैंक, वो सेकंड रैंक, मैं ज़्यादा में ज़्यादा थर्ड रैंक. तो या तो बाकी जो है वो सब एक ही गैंग के है, विच आर 10th and 20th and what not. So we leave them apart and we consort with these people. So there is this lot of image. ये जो इमेजरी जो है ना, इमेज का खूबी यही है कि हम खुद कोई इमेज नहीं, हमारा कोई इमेज ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट बॉर्न विद एनी इमेजेस. इमेजेस जो है या बिलीफ सिस्टम जो है वो उनको दिया जाता है फ्रॉम एनवायरनमेंट, फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द पीपल. पीपल गिव यू इमेजेस, पीपल गिव यू बिलीव्स. You see, you watch, you read, you hear, you develop your own images. और ये एक प्रॉब्लम है जो लोगों को लगता है कि ये अच्छा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है गोइंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन ऑन डॉक्टर्स एंड क्वालिफाइड पीपल. अभी जो न्यू प्लेयर है, नया खिलाड़ी को क्या है, ही नोस दैट ही डजंट नो. राइट. तो ही इज विलिंग टू बी एजुकेटेड. ये बहुत बड़ा फर्क है. He knows that he doesn't control anything. विशाल भाई मैं क्या करूं, आप बता दो, वो मैं काम कर दूंगा. नहीं ये RSI BRSI मत बोलो मुझे, आप सिर्फ बोल दो कि कौन सा स्टॉक में सिग्नल बैठा है, मैं वो काम कर दूं. इट्स अ कंप्लीट सरेंडर. राइट. देन यू टॉट हिम, बोले ये सीख लो, ये लेवल्स है, ये ऐसा ही है वैसा. देन ही फील्स ही इज अ लिटिल बिट इन कंट्रोल. And actually that is what you are doing, you are giving him control on what he should do. But if you mistake that education as I am now controlling the environment, वो बहुत बड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि आप environment को control ही नहीं कर सकते. But education थोड़ा mistaken belief दे देता है कि हम हमारे environment को control कर सकते हैं. और ये belief कहाँ से पैदा होता है कि मैं पूरा पढ़ाई कर लिया मेहनत करके और पूरा वॉमिटिंग कर दिया तो मेरा फर्स्ट रैंक आ गया, या ऊंचे नंबर के कोई नंबर मिल गया, एडमिशन मिल गया बेटर कॉलेज में, बेटर कॉलेज तो बेटर रिकग्निशन, बेटर जॉब, एंड इट्स अ सीरीज ऑफ लीनियर थिंग्स विच हैपन. तो ये फॉल्स सेंस ऑफ फीलिंग देता है कि मैं मेरा एनवायरनमेंट का कंट्रोल में हूँ. ये कंट्रोल है ना, दिस इज व्हाट हेल्प्स यू टू लीड योर लाइफ बेटर. स्टूडेंट है, पढ़ाई करो, कंट्रोल में रहो. कॉलेज में आ गया और पढ़ाई करो, कंट्रोल में आ गया. नौकरी लग गया, मेहनत से काम करो, किससे भिड़ना नहीं, जो बॉस बोलेगा वो सुनना. तो तुम्हारा बिहेवियर में कंट्रोल करते हो तो, और तुम्हारा एरिया, योर जॉब इज सिक्योर, योर सैलरी इज सिक्योर. Now you take this a little further. प्रोफेशनल जो है ना, जो डॉक्टर्स है, जो लॉयर्स है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एंड अन्य जो प्रोफेशनल्स है ऐसे, उनकी पढ़ाई और हो गई. आफ्टर यू स्टॉप्ड दे आर स्टिल स्टडिंग फॉर 7-8 years मोर. अच्छा, तो सोसाइटी उनको एक दर्जा दे देता कि आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, एंड देयरफॉर by a derived conclusion I need to listen to you. मतलब you are more ज्ञानी, तो आपका बात सुनना पड़ेगा. तो जितने बड़े प्रोफेशनल, जितना सक्सेसफुल कैरियर इन वॉट एवर दे आर डूइंग, द मोर दिस फीलिंग दैट इज एंजेंडर्ड विद इन देम, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, उनकी सोचने की ढंग है, ये कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट वाली है. पेशेंट, मैं जो दवा देता हूँ वही लेना है, नहीं है तो चलते पड़ो. जो वकील है बोले मैं जो बोलता हूँ वो सुनना है. जो जज बैठा है वो बोले मैंने जो बोला वो फाइनल, इसके आगे जाना है हायर कोर्ट में जाओ. सो एवरीथिंग इज लेयर्ड विथ कंट्रोल. कंट्रोल एज अ मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ. तो इसीलिए जो पोजीशन ऑफ कंट्रोल में ऑलरेडी है
और वहाँ पर उसकी कंट्रोल की वजह से उसका लाइफ चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, वो ये उसके लिए वही सच है कि एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इज द वे। तो वो मार्केट में आ जाता है, उसके पास क्या है, पैसा है, और ये भी एक फीलिंग है कि रुपया है तो कंट्रोल है। फैक्ट है इन लॉट्स ऑफ एरियाज ऑफ लाइफ, बट मार्केट में वो फैक्ट नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं कंट्रोल यहाँ लगाऊं तो मैं जीत जाऊंगा, इसलिए मोस्ट ऑफ देम स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडर से धीरे से वो डिलीवरी हो गया, डिलीवर से वो इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सब क्यों? आई विल नॉट एडमिट दैट आई डू नॉट हैव कंट्रोल, और मेरे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, और जैसे जैसे मेरा रुपया जा रहा है वो कंट्रोल फिसल रहा है। ये भी पोसाता नहीं है बहुत लोग को, कंट्रोल मेरे हाथ से फिसला जा रहा है। तो मैं आई जस्ट पोस्टपोन द इवेंचुअलिटी, बोले उसको डिलीवरी बना दिया, फिर उसको इन्वेस्टमेंट बना दिया, उसको लॉन्ग टर्म बना दिया, फिर बोले मैं तो भूल जाता। व्हाट इज ऑल दिस इज अवॉइडेंट बिहेवियर। तो साइकोलॉजी का कितना अहमियत है इन सक्सीडिंग, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग, इन लाइफ ऑल्सो, ये तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। बट ये सीखने से किसी ने रोका नहीं आपको। दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू लर्न इन योर 20s यू विल बी सो मच बेटर ऑफ। इसलिए मैंने कहा एक्सपोजर ले लो, नॉट जस्ट मार्केट, अबाउट द माइंड। आपने 2 बार बताया कि यू शुड लर्न दिस एंड यू शुड लर्न अबाउट द माइंड। इट इज अ परफेक्ट सीक्वेंसिंग विच यू आर डूइंग, बट लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं इन देयर हरी टू डिप्लॉय व्हाट यू हैव टॉट, कि ये मेथड को जल्द से जल्द लगाऊं, 2 रुपया कमा लूं। अच्छा, शी इज टॉकिंग अबाउट दिस एवरी डे, शी इज होल्डिंग प्रोग्राम, वो ठीक है, मैडम बोलते रहती है, बट चलेगा। फिर जो दिन 2 लाफा लगेगा तो उनका बात सब याद आएगा, बोले यार दिस वाज टोल्ड टू मी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर वो आएगा। सो ये सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एवरीबडी, टिल दे गेट री एजुकेटेड। तो वही है ना एक कहावत कि भाई यू कैन एजुकेट द इग्नोरेंट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू री एजुकेट द मिस एजुकेटेड। तो ये लोग सब ये एनवायरनमेंट के लिए मिस एजुकेटेड है, क्योंकि वो कंट्रोल का एनवायरनमेंट है। फार्माकोपिया जान गया तो फिर यू कैन प्रिस्क्राइब वेल। सर्जरी के लिए तुम्हारे हाथ एकदम एफिशिएंट है तो तुम सर्जन हो जाओगे ऑफ हाई रिप्यूट। तो बस आपने कंट्रोल कर लिया, बोले इसका 1.5 लाख रुपया, उसका 5 लाख रुपया, इसका 10 लाख रुपया, जो है बोले पैसा नहीं है फिर भी कर दो सर, जान बचानी। इट्स ऑल कमिंग डाउन टू दैट। सो नाउ फाइनल योर क्वेश्चन विच यू आज, उसका आंसर अभी दे रहा हूँ, लॉन्ग प्रियम्बल, कि इसको कितना टाइम लगे। 1 साल में सीख जाएगा, 2 साल लगेगा, इसका आंसर नहीं है। वो कितना टाइम में उसका मिस एजुकेशन को छोड़ने को तैयार हो गया और ये विलिंगनेस दिखा दिया कि आई हैव टू गेट री एजुकेटेड और इवन जस्ट बेसिकली एजुकेटेड अबाउट दिस न्यू एरिया। बस वो 3 महीने में भी हो जाए। जिसने अपना माइंड को रीसेट कर लिया, या 3 साल भी लगे और कुछ नहीं हो गए। दिस इज द क्रक्स ऑफ इट कि भाई एजुकेशन के लिए आप तैयार होना चाहिए। मुझे सब आता है, आप मुझे सिर्फ 2 मेथड दे दो, वो आदमी तो पिटने वाला ही है मार्केट में। So you spoke about mindset here, about how important it is to identify what mindset you are, and then you begin the entire process of changing the mindset. In my so many years of helping students work on their mindset, this is the number 1 challenge that I have been facing, or a trait that I have been seeing in people. कि कैसे जब mindset की बात आती है, 2 things happen. कभी-कभी सबसे पहले उनको लगता है कि ट्रेडिंग का इससे क्या कनेक्शन है, स्ट्रैटेजी सिखा दो, as you said, and I am set, because they have already built a successful career in some other field. And second, this is dirty work, this is gory work, क्योंकि ये काम करने जब बैठते हैं, जब exactly you said, our old conditioning, our old belief system, all of it comes into play. So how do you want to help them, right? You want to help them, रास्ता दिखाना है कि ये रास्ते से जाओगे तो ही सक्सेस मिलेगा, but that is a big hindrance. What could you do to help someone there in that area, according to you?
So see, there I will dive back into life. What is the difference between somebody you call as being smart, intelligent, and somebody who's not? वो dumb है तो वो अलग बात है, but ordinary and smart. We tag somebody as being, अरे बहुत smart लड़का है. You know, at this age also he is smart. We tag them by how quickly they are able to assimilate what you are saying. आप जो सवाल पूछते हैं, the smarter ones know even your angle, Yeah. but the normally smart people, they know what is the background, what is the context, they catch that. How do they do this? Or even when they are grown up, I'm not talking just about the children. जो ordinarily whom you look at a person and say, okay, he can do some things, but this guy, I will trust him to do a lot more things. Life is a series of vignettes, right? You're living through them, second to second to second. और वो सब एक फोटोग्राफिक इम्प्रेशन है, सीरीज ऑफ देम. अब थोड़ा डीप में जाएंगे तो देन वी विल हैव टू गो टू द लेवल ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसफर्स एंड ऑल दैट. तो वहाँ पे नहीं जाए अपन, बट इट रियली कम्स डाउन टू दैट कि भाई ये जो साइनेप्टिक ट्रांसफर्स जो होते हैं ये कितने फास्ट हो रहे हैं. तो इवन दीज ट्रांसफर्स आर अ हैबिट where this signal with this signal forms a bond over a period of time. And this transfer from here to there happens quickly. तो दो जनों में जब एक कॉन्वर्जेशन हो रहा है तो मैं कुछ 10 चीज़ बोल रहा हूँ, सामने वाला उसमें से या तो 8 चीज़ रिसीव कर रहा है या 12 रिसीव कर रहा है. जो नॉर्मल आदमी है, जो लेस स्मार्ट, लेस ऑब्जर्वेंट, लेस इंटेलिजेंट है, उसको मोटा मोटा 4 या 6 तक ही समझ में आता है. तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी थिंग्स यू कैन पुट टुगेदर इन योर ओन इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम व्हाट यू आर गेटिंग एज एन इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. आप तो कुछ कुछ बता रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है, इसका कनेक्शन उधर है, उसका कनेक्शन इधर है. तो their internal environment makes for a great role in this. Now, if you are dealing with somebody one-on-one, which is what psychiatrists do, and they take them into all kinds of paths where they will make this connection between what is throbbing inside his head and how I say something which will connect with that. Connect that, right. Abhi, we are not trained psychiatrists, but you can understand this at a broader level that every man, woman, child, everybody leads his life by looking at patterns which exist in their life. Your parents are a pattern at the start. Your mother is the first pattern. Right. Then suddenly this odd looking person comes in and says, I am your dad. तो अभी वो इंक्लूसिव होके दूसरा पैटर्न हो गया, फिर ये मामा है, चाचा है, भाई है, तो एक एनवायरनमेंट उधर क्रिएट हो गया, इसका एक पैटर्न है. ऐसे ग्रो होते होते हर चीज़ का पैटर्न है. और पैटर्न्स बिल्ड बिहेवियर्स. टीचर ने ज़रा ज़ोर से आपकी तरफ देख लिया तो आई हैव टू स्टॉप टॉकिंग. आई नो दैट इज़ अ पैटर्न. She has not said anything. She just made eye contact and, crumpled her eyes or whatever. And same thing with your mother. Same thing everywhere. So there are millions of patterns on which our lives are built. अब मार्केट भी एक पैटर्न है. वो अपन चार्ट में एक तरीके से देख रहे हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट उसको फिगर्स के टाइप के पैटर्न देख रहे हैं. सब लोग ये पैटर्न का जो डॉट्स है उसका कनेक्शन करने को सीखे हुए. जब RSI
करके आपने बता दिया, फिर उसके आपने डॉट्स बताए सारे, फिर आपने सारे डॉट्स को कनेक्ट करे, गारंटीड आज के तारीख में भी 25% ऑफ योर क्लास इज नॉट गेटिंग इट. दे विल नॉट. They will not. True. क्योंकि उनको ये डॉट्स कनेक्ट करने नहीं आते. दे डोंट नो हाउ टू कनेक्ट डॉट्स बिकॉज वो उनका एक बिहेवियरल पैटर्न बना ही नहीं. जो स्मार्ट लोग हैं ना, वो इनहेरेंटली इनेटली या उनका वासना स्टेट बोल दो या जो भी बोल दो, जहाँ जितना आपको डीप जाना है, they have learned this aspect of human behavior which is connecting the dots. समझदार को इशारा काफ़ी है, एक फ्रेज है ना, ये क्या है, इशारा क्या है? इशारा इज ओनली अ पैटर्न विच आई एम डूइंग. राइट. और वो चीटिंग में भी वही पैटर्न था. वो श्रीनाथ ने ऐसा ऐसा किया तो समझ गया कि अभी वो एक डेड बॉल फेंकने वाला है या एक बाई देने वाला है, एक नो बॉल करने वाला. राइट. समझने वाले समझ गए और बेट सब लग गया. And there are patterns everywhere. So, at the core of it all is the patterns. So, I would go a little radical in this by saying that not every student of yours will be amenable to connecting the patterns. But आपको तो उसको you want to produce improvement. So now you will have to divide your work between gross patterns and more nuanced patterns. अब 60-40 तो बोल दिया, अभी उसमें एक पैटर्न करके तुम उसका टारगेट कैलकुलेट करते हैं, ऐसा काडवल ने बताया. लोगों को वो मार्क करने को डिफिकल्ट हो जाता है कि विच आर द 3 legs और कैसे मैं टारगेट कैलकुलेशन करूं. अभी आप पिवट लाइंस बोल देंगे तो ठीक है, दे आर जस्ट 2, 3, 4, 5 whatever lines, horizontal lines, और उसके साथ कोई अरिथमेटिक जुड़ा हुआ है. बट उसके न्यूएंसेस जो है कि ये लेवल 1 और 2 के बीच में है तो ऐसा मतलब निकालो, 2 and 3 के बीच में है तो ऐसा मतलब निकालो. Everything is nuanced. Elliott wave is completely nuanced. You know, whatever aspect of analysis you take, there is the straight arrow stuff. बोले ये 60 है, ये 40 है, इसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट है, इसके नीचे गया तो ब्रेकडाउन है, इधर से फिर गया तो सपोर्ट है, इधर से डिप हो गया तो रेजिस्टेंस है. समझ गए? बोले हाँ, इतना तो मैं समझ गया, बस काम करूं. क्योंकि उसका बस का बात ही नहीं है, इसके आगे का न्यूएंस निकाले. अब यही चीज़ आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो सॉफ्टवेयर में न्यूएंस बिल्ड करना बहुत मुश्किल है. यू हैव टू राइट 1000 लाइन्स ऑफ कोड कि 60 का 61 हो जाता है. और आईज एंड और ब्रेन्स कैन इंटरप्रेट क्विकली कि यार ये अभी भी एक डबल टॉप एट 60 एंड दैट्स अ वेरी बेरिश सिग्नल. दैट इज अ न्यूएंस्ड इंटरप्रिटेशन. Sometimes we will say that at 65 also. Right. But a code will not recognize it. So code also reads patterns, but very well laid down patterns. So codes are not very smart. Codes are duds. मतलब जो कोड में लिखा गया है वही वो करेगा, उसके आगे कुछ नहीं करेगा. Lots of human beings are like that. But you will find if you have a class or a batch of 20 people, there will be 10 people who are very sharp. You change your style with them to tell them about nuanced aspects of technical analysis or of applying the rules, of, you know, interpreting human behavior rather than what is on the chart. Ultimately, chart is a depiction of human emotions at work only, ना. दूसरा तो कुछ है ही नहीं वो. तो इमोशन के बारे में जब भी अपन बात कर रहे हैं, एंड इन इम्पार्टिंग साइकोलॉजी टू द पर्सन वी आर डीलिंग विद ओनली इमोशन. तो इमोशंस कैन बी एक्सट्रीमली न्यूएंस्ड, विच मीन्स दैट वेरी फाइन पॉइंट्स. वो एक कभी आप एक पिकासो का पेंटिंग देखते हैं, बोले ये तो अच्छा है, फिर उसका ही म्यूजियम में है, आप वो देखते हैं, दूसरा बोले ये क्या है. दोनों पिकासो नहीं बना है. But one you cannot make out anything, and in the other you are saying, ah, what a brilliant piece of work. अभी किसी ने ले लिया ना, some Chinese millionaire, he paid $6.2 million कि वो बनाना पे एक प्लास्टर चिपकाया हुआ है. This is all was the painting. Okay,
लिटरली, आई एम नॉट किडिंग यू, आप पेपर पर निकाल के देखो कल परसों का, उसमें है एक बनाना है, रियल बनाना, उसके ऊपर बैंडेड चिपका हुआ है, बस ये पेंटिंग है। ये एक कोई मिलियनर होगा, बिलियनर ही होगा ना, $6.2 million. How in some very, very deeply nuanced way, that painting is talking to him. So it's very difficult to generalize. So if you go, I'm sure you have gone Palace of Versailles में जाएंगे तो you have those giant canvases. Yes, Yeah. yes. You know, by 15 feet by 15 feet. Your mind boggles as to how he got all that symmetry right. In those days. Yeah, that the left hand top corner with the right hand bottom corner का कनेक्शन कैसा बिल्ड किया, मतलब इतना क्लैरिटी उसका माइंड में होना चाहिए टू कनेक्ट अप द होल पेंटिंग. That is why they are masters. You don't get a Caravaggio every day, right? So you got only one. So it's like this among all the people also. तो आपको ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. You cannot expect from them. तो जो थोड़ा were unable to connect the nuance point तो आपको बताना ही है, क्योंकि the real deal is there. यहाँ से 10,000 बनेगा तो वो न्यूएंस लगाएंगे तो आप 1 लाख रुपया बना लेंगे, और असली मज़ा तो लाख रुपया बनाने में है, राइट? तो वो न्यूएंस की ज़रूरत है उधर, बट न्यूएंस सबकी बस की बात नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज, कैन न्यूएंस बी लर्नड? इट्स लाइक, कैन पेंटिंग बी लर्न? आंसर इज yes, and also answer is no. If you do not have an innate artist within you somewhere, then it will be very difficult for you to learn painting. कहीं आप में थोड़ा सा वो आर्टिस्ट्री कहीं हो तो learning that will be an easier thing for you, and once you learn it and start applying it and you are guided well, then doing it well will become easier for you. तो आपको ऐसा लेके जाना पड़ेगा, पहला थोड़ा ग्रॉस वाला दिखाओ और फिर उसके बाद थोड़ा सटल दिखाओ, देखो हु पिक्स इट अप, उनको और सटल दिखाओ. तो अपने जो it is sequential. It is like learning, your scriptures or any of the good books. You have Prasthana Grantha. I mean, these are the opening books. तुम ओपनिंग बुक्स नहीं पढ़ेगा कुछ और सीधा बोलेगा मैं कैवल्य उपनिषद पढ़ेगा और उसका समझ में आ जाएगा, वो नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली न्यूएंस्ड, राइट? एंड देन Sadhguru writes a book on death and everybody wants to know about Kenopanishad or Kathopanishad. अरे कहाँ से समझ में आएगा? नहीं आ सकता है. तो you have to read the initial part. तो again we go back to what we discussed earlier. पहले सबका एक्सपोजर लो और ठीक से सीखो, फिर एप्लीकेशन करो, फिर वो scale up. Nuances are for scaling up. Right. But at the level that you asked me the question also, it is to prevent them from making, bombastic mistakes. क्योंकि मार्केट में if you stop doing the wrong things, already you are better off. फिर you both will teach them the right things, so then they become even better off. They learn it well, internalize it well, they become even better off. Then they apply it even well, then they are set for scaling it up as much as they want. So what you just said is, does that mean that, if I have to conclude this, that everyone, if they just know the basics without getting into the nuances, they can survive in the market systematically if they do it with discipline? Nuances तो basic से ही उभरते हैं, complication से nuances बहुत कम रहते हैं. Right. जो हायर टॉप हायर बॉटम है उसके साथ ही तुम्हारा सर्वाइवल इटसेल्फ इज गारंटीड इन द मार्केट. Right. सर्वाइवल इज गारंटीड. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एकदम करोड़पति रुपया बन जाओगे, बट सर्वाइवल इज गारंटीड. तुम उसके खिलाफ नहीं जाओगे, दैट इटसेल्फ इज इनफ. अब आप बोल दो, आई वॉज फॉन्ड ऑफ सेइंग दिस एट द टाइम ऑफ दैट व्हेन आई यूज्ड टू डू ट्रेनिंग. तो आई वुड फिनिश 2 hours of day 1 or whatever, finished our theory, and then I would announce that your course is over. Actually it is over here.
who have understood can go home. Your learning is complete. But if you feel that it is not so, you can stay over for another 1 week and learn the rest. तो न्यूएंसेस उभरते हैं बेसिक से ही. जब बेसिक एकदम आपका कड़क हो तो न्यूएंसेस अपने आप में दिख जाएगा. और उसके साथ साथ एक क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग थ्रू ट्रेनिंग इन साइकोलॉजी भी हो जाए ना, तो वो बहुत जल्द दिख जाएगा. बिकॉज वो ऑफस्केशन नहीं होता है ना, ब्रिंगिंग इन थिंग्स नीडलेसली ओवर देयर. सो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग इज द greatest gift that a teacher can give to a student. Unfortunately, उसका अप्रिसिएशन कम है. अपने जितने भी गुरु लोग हैं, स्पिरिचुअल गुरु है, वो सिर्फ इसी का बात करते हैं ना. What are they saying? You are living in a world of Maya. This thing Maya will produce Avarna, which is a wheel, and then it will produce Vikshepa, which is a projection. और इसी में सारा प्रॉब्लम है. तो माया को तो डील नहीं कर सकते, वो आवरणा को हटाओ तो विक्षेप अपने आप बंद हो जाएगा. सो यू विल stop projecting the wrong things because the wheel has fallen away. And then the education is for removing the wheel. That's the whole purpose of education. और फिर एक कभी होगा पता नहीं, एक दिन सडनली वो आहा मोमेंट आएगा. Right. जहाँ the wheel has fallen away. I will tell you my own example. 74-75 से मैं मार्केट ट्रैक करने लगा. 93 के आसपास होगा, 92-93. ट्रेडिंग तो कर ही रहे थे. boom and bust, all that things was happening. You learn something, you apply it. It becomes a little better, but you keep on making the mistakes. Even today the mistakes happen. It's not as though that we are mukt from it. But then I had gone to Shirdi and I was in the train. वो मनमाड़ एक्सप्रेस में बैठा है मैं और किताब पढ़ रहा हूँ मैं on trading psychology. And then there was this one moment which I distinctly remember, I can never forget it. I said, this is it. I got it now. What it is, I got it now. And if you would have all read and eulogized Trading in the Zone, Mark Douglas. Yes. But a far better book, and told to me by Mark Douglas himself that this is a far better book, but it is a horribly written book. This is what he said to me. Okay, personally. But it is in his book where there is one particular area where he describes how memories are formed and how they are lightning fast in ways that you cannot even imagine, and how the past, present and the future coexist in the same moment. And that was such an incredible revelation at that moment. I had already read it 1 or 2 times earlier and वो सब चले गया. Because, but there on that day, sitting in a train with some 50-70 other people and reading that paragraph or that chapter, that revelation happened. And after that day I was never the same. Never the same. I can distinctly remember that event. So वैसा सबका लाइफ में एक मोमेंट आता है जहाँ पर वो बोलते हैं ना लाइफ चेंजिंग मोमेंट, ऐसा टाइप. बहुत कुछ अलग अलग हो सकता है, बट फॉर मी इन ट्रेडिंग कैरियर, इन अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एज अ होल, दैट वाज द मोमेंट कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर past, present and future coexist in the same instant. And to understand that takes so much of explanation. That's in-depth thing. Yeah. तो कभी आपको टाइम मिले तो वो you just read it. Maybe you may not follow it the first time, but you read it 10 times.
then you will understand what he's saying. And once that happened, then The whole thing happens. So, what books would you recommend on mindset, specifically for someone who's a beginner, suppose? For Who's anybody, actually, yeah. Yeah, for anyone who yeah, wants to because study it's about at mindset all psychology. levels. Yeah. Dekho, there are many books from the past, like I said. Mindset thing, I was really grabbed only by Mark Douglas. And because I met him personally and, I used to listen to his cassette tape. And I'll just tell you this interesting, he had come to India. So before that, before Metastock, that company used to be called Computrack. Computrack used to do training seminars. This I am talking about late 80s. So they used to always miss India because India was never a big deal for the markets even. So once it so happened that they came to Singapore, and on their way back, I think their flight, I don't know, whatever, something was there, they came to Bombay. And there were a few of us, and the owner of Computrack was there. We happened to meet him. हम लोग कुछ तभी गिन चुन के 15, 20, 25 टेक्निकल एनालिस्ट होते थे. तो हम उसको मिलने गए. Then I knew they were doing the seminar because I used to get the book, the manual of the seminar, and I used to order their tapes. तभी कैसेट टेप्स में ही आते थे. तो आई यूज्ड टू ऑर्डर देयर टेप्स एंड ऑल दैट. सो आई टोल्ड हिम कि भाई प्लीज़ एक तुम सेमिनार इधर करो. तुम लोग 3 आदमी इधर आए हो, अभी ठहरे हो इधर. वी विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स. यू जस्ट डू 1 इवनिंग और जस्ट 1 डे. सो ही एग्रीड. एंड देन वी गॉट सम स्पॉन्सर. ये वो सब हुआ और वो सेमिनार हुआ. तो उसके पहले मैंने मार्क डगलस के टेप्स वगैरह सब मंगा के वो सब सुन रहा था. और मैंने उसको इतना बार सुन लिया कि द टेप ब्रोक, वो कैसेट टूट गया था. तो मैं ही वॉज देयर एज वन ऑफ द स्पीकर. सो आई वेंट एंड टोल्ड हिम कि भाई आपका टेप जो है वो मेरा टूट गया. आपके पास कोई टेप आपका खुद का पड़ा हो जो आपने उधर डिस्ट्रीब्यूट किया तो आई वुड अप्रिशिएट. कुछ रुपया है तो मैं दे दूंगा. तो he says, hey Tim, hear this. This man here says that he has heard my tape so many times that it broke. So the other guy went inside and he got me 4 tapes and said, you keep this. Wow. Oh, so nice. He was the prime influence. But then there are so many others. You yourself have been a big follower of, let's say, Van Kitab. Yes. And many others like that. It's like whom you tune into. Right. You get tuned to Sadhguru, but not into, let's say, Sri Ravi Shankar. They are both good in their own areas, right? It's just that मेरा साथ आपकी ट्यूनिंग बैठी है और इनकी नहीं. तो वैसा वो डगलस का 80s में ही मेरा ट्यूनिंग बैठ गया तो उसके साथ ही रहा. तो मैंने यूएस गया तो उसको मैंने कोई किताब दिए अबाउट और स्पिरिचुअलिटी वाला किताब. मैंने बोला जो सारी बातें तुमने करी वो इधर है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरलैप बिटवीन ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइकोलॉजी. Oh, yes, Yeah. totally. तो यही अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एट द बीएससी. तो आई यूज्ड टू जनरली डू इट एट द एंड. तो एक बार मैंने क्या किया उसको रिवर्स कर दिया और मैंने शुरू में किया. वो प्रोग्राम का स्टार्टिंग में कर दिया. तो वहाँ पर एक स्टूडेंट था who had come for that. Then at the end of the thing he was waiting for everybody to go. तो वो खड़ा था उधर. तो मैं सोचा कुछ उसको सवाल पूछने का. मैंने बोला क्या है, if you have something to ask. So he said, no, I want to take you to meet somebody. मैंने कहा, he said he is Parthasarathy. Oh, So he was a student of Parthasarathy. Parthasarathy's daughter is Jaya Rao and Sunita, I think, Rao. They are all big Bhagavad Gita exponents. So I said, that time I was not so much into spirituality and all that. वो तो बाद में आए. तो he said, I want to take you to meet Parthasarathy. So I said, who's Parthasarathy? So he said, नहीं, हमारे spiritual guru है.
तो मैं बोला I don't understand what is the point. He said, a lot of what you said today I have heard from him. तो मैंने कहा ये कैसा हो सकता है, मैं तो इधर तुमको मार्केट सिखा रहा हूँ, रुपये का बात सिखा रहा हूँ, और तुम स्पिरिचुअल लीडर का बात कर रहे हो जो रुपये के बारे में बात ही नहीं करेगा. एंड देन he actually took me, I went, I met Parthasarathy, then he gave me his book, and then I read the book. No, this fellow gave me the book. And he said, this is Which about is the him. book that you read first? Or This is called Vedantic Treatise. Treatise, yeah, that's one उसका of वो his. book. So I read Vedantic Treatise fully. I found it very interesting because it paralleled so many thoughts. So then we both went to meet Parthasarathy, and then I asked him many questions from that, paralleling the two so that I could make the connection. So then Parthasarathy turned to him and said, you have brought me for the first time somebody who has actually read my book thoroughly. Oh, wow. So there is a lot of parallel. See, your entire spiritual study is all indicative, right? There is no direct learning, it's all indicative learning. So indicative means it's all based on patterns. And through the pattern you connect various things and you arrive at a conclusion which tells you of the whole. Patterns are all independent items, seemingly independent. But in a specific environment, they are all connected, which is what quantum physics really says, right? So that is how it led to reading on quantum physics also. Now recently I just bought a book called Vedic Quant. I just bought that book, I have not yet started reading it. It is seeking to combine Vedic studies with quantum physics and seeing where that bridges. Very interesting. I'm sure it will be interesting or it will be a big con. One of the two it will be. I don't know which it is. But वो book देखा मैंने ले लिया उसको. So patterns are the way that people think. People build their stream of thoughts, and from the thoughts emerge the action. And then the feedback loop of the success or otherwise of the action, producing more thoughts, more patterns, and then the whole jing-bang which happens along with that. So if you concentrate on what are the patterns to which this man is reverberating to or this man is reverberating to, फिर उनका नस आप पकड़ लेंगे और फिर किसके साथ न्यूएंस में डील करना है और किसके साथ थोड़ा ग्रॉसली डील करना है वो आप डिसाइड कर पाएंगे. Great. So we have this, आपने जैसे बताया कि we also speak a lot of spirituality. In fact, you just mentioned Sri Sri Ravi Shankar. We have inculcated his programs into our programs. Oh, fantastic. So we have done a tie-up. Because people, because of images, are more prone to believe what he says when he says the same thing what she's saying. Yeah, actually. But वो image का prisoner है लोग, वो बोलेंगे तो सच्चा, ये बोलेंगे तो हाँ ठीक है. Right. So we actually said that हमारा जो पहला प्रोग्राम है बेसिक, उसके साथ आपको बेसिक ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग करना ही पड़ेगा, where you they teach you art of the Sudarshan Kriya and Pranayam and other life lessons. And if you do the advanced course with us, we also give the advanced course of meditation, silence course. And some people find it very weird कि ये क्या combination है, but it's basically the same. When I say my favorite, another quote I use in technicals is focus on the process, not on the profit. मतलब आप प्रोसेस से काम करोगे सिस्टम से तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, which is nothing but फल की इच्छा मत कर, कर्म कर, that's the thing. So I think that's a great combination of things which we need to understand. Now comes the other esoteric kind of combination with stock market is astrology. Yes. So I have this, of course I have learned from many things from you, time cycles and Fib cycles and Gann cycles and stuff like that. Plus I went into other stuff also. So मैंने एक अभी रिसेंट पॉडकास्ट में लास्ट ईयर किधर तो बोल दिया कि एस्ट्रो का रोल है मार्केट में और इक्विनॉक्स के दिन पे मार्केट घूमेगा और मार्केट टर्न मार देगा. एंड इट वाज रिलीज्ड इन जुलाई एंड टिल 2-3 months पीपल वर ट्रोलिंग एंड देन लाइक ऑल थिंग्स हैपेंड कि सर अभी आप तो एस्ट्रो में घुस गए हो, आप तो अभी चलता नहीं है. And then comes equinox and then the market turns down and it goes down some 1,000 points and all that. So I have complete faith in this. So how do you see astro cycles or time cycles? How powerful or how we can get an edge
over regular technical analysts by just adding this, which I think is a great edge. But what is your view on astro cycles? Everything in our life is ruled by time. Time is a construction of planetary motions. 24 hours जो अपन डे गिनते हैं, that is a certain planetary motion of the earth around its own axis. Our year is like that and everything is like that. And for eons, they have been exact. Right? So there is nothing interfering with them. And whatever interferes falls away and this remain constant. So if time is a constant and that rules, then why shouldn't it rule the markets? Why then should it not rule a format which analyzes markets? तो बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहला तो उसका हॉरोस्कोप कास्टिंग होता है. This is done with some little, let's say, ulterior motives. कि तुम, when will you get married? You know, when will you buy a house? You know, will your father become prosperous because of you, or will he become a kangal? Right. You know, stuff like that, which is all, let's say, matlabi type thing. Right. But वो तो casting करते ही हैं, और वो भी based on certain cycles ना, right. कि ये 5वें स्थान में ये रहे और 10वें स्थान में ये रहे और ये इसका enemy है और ये इसका enabler है, and all those kinds of relations. And ultimately, Jyotish Shastra is part of the Vedas. Right. It's not some study which came up with somebody else. Right. So, one of the parts, Vedanta is the last part. Okay, that is the last part, and that is all in sort of let's say intellectualization of the whole study of spirituality. Intellectualization is not for everybody. So it is for certain set of people only, and that is how the Varna system and all came into being. So the Brahmins were thought of as the ones who would be intellectual enough to understand the Vedanta or the Vedantic aspect, which was again divided into two, the Brahmanas and the other sutras and all the rituals and all that. That too was divided only so that there will be an intellectual understanding and there will be actually a physical performance. Right. So if something like Jyotish Shastra was good enough to be part of the Vedas, then I see very little point in questioning its validity in life. If you are questioning that, you might as well question Vedanta and go and tell Sadhguru or Ravi Shankar saying, this is all nonsense. Tum ye chodo. There are people who do that, but if you are not questioning that and you feel that what they are doing is something good, something beneficial, why should you think askance about this? If practitioners are bad, then that item comes into disrepute, which we have seen with so many. So similarly, the practitioners of this area have also been bad. So this area has also come into disrepute. Right. So baby with the water wala kissa nahi karne ka. You look at it from that angle, ki if this is good enough to be part of the Vedic studies, and it has been deciphered at times when telescope was unknown, you know, nothing else was known, but still in so much of detail that has all been laid down. You just read about the birth of Uttarayan, right? And just read the detail of that. And what is the relationship between Sankrant and Christmas? Extraordinary details are there and which are so fact-filled that it just blows your mind
that such things were known so many centuries and eons ago. If you don't develop a belief only on that ground कि ये एक बहुत पावरफुल स्टडी है जिसके बारे में आज सिखाने वाले बहुत कम है, धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर तो ये स्टडी विल गो अवे इनटू ओब्लिवियन. तो व्हाट इज टू से, तो फेथ तो रखना ही है, बट कोरिलेशन बताने वाले बहुत कम है. अब इस कोरिलेशन में कैसा जाए कि आप, let us take, you mentioned the cycles of W.D. Gann. So Gann was also an astrologer. I was in Florida and I got in touch with somebody who's an expert in land, Les Clements करके, he was there in Florida. तो मैंने उसको फ़ोन किया, बोले I am here for a week and I want to learn from you. तो उसने मेरे को बोला you will have to learn astrology first. पहला मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा तुमको, उसके बाद WD ज्ञान सिखाऊंगा. मैंने कहा यार बॉस मेरे को ज्ञान सीखना है, एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखना. बोले नहीं आपको सीखना ही पड़ेगा. मैं बोला मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम हियर ओनली फॉर अ वीक, वो भी आई हैव गॉट फैमिली कमिटमेंट दिस दैट, तो 2-3 दिन है मेरे पास सीखने को. बोले चलो एक दिन एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा, 2 दिन ज्ञान सिखाऊंगा, बट ये तो सीखना ही पड़ेगा. तो तभी से इंट्रीगिंग हो गया, बोला ये तो कुछ है. So then when I started doing a lot of cycles based on the charts, I used to always find that it would tally with the extraterrestrial cycles. ये तो चार्ट जो कर रहे हैं वो टेरेस्ट्रियल साइकिल है. ये कंपनी है, प्राइस है, आप ट्रेड कर रहे हो, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, टॉप हो रहा है, बॉटम हो रहा है. बट जब ये एक्स्ट्रा, जैसा आपने बोला इक्विनॉक्स हुआ तो और मार्केट गिरा, ये आप एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल साइकिल को कनेक्ट कर रहे हो कि सन मून प्लैनेट इनका सब कुछ कोई मिलाप हुआ या कोई वॉट एवर हैपेंड, एंड देन देर इज एन इम्पैक्ट ऑन वॉट पीपल डू ऑन अर्थ, एंड दैट टू इन अ मिनिस्क्यूल एरिया कॉल्ड स्टॉक मार्केट, एंड दैट टू इन वन इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी. तो ये कितना मिनिस्क्यूल है. इफ यू टेक अ पर्सपेक्टिव, द अर्थ इज अ डॉट इन फ्रंट ऑफ द सन. The sun is a dot in front of something called Jameson T218, which is another big sun. And the Jameson T218 is a dot against something else. उसका नाम मैं भूल गया, वो है. ये सब डॉट्स है. और उसके अंदर निफ्टी किधर है डॉट? तो मिले ही नहीं अपने को, बट इम्पैक्ट तो हुआ. तो स्केप्टिसिज्म क्यों इतना? वो आपको ठीक से वो दिखाई नहीं गया. द एस्ट्रोलॉजर इज ऑलवेज अ कैरिकेचर इन मूवीज. राइट. जब तुम मूवीज देखते हो, कैरिकेचर देखते हो, तो तुम्हारा इमेज भी ऐसा हो गया, तुम्हारा लर्निंग वैसा हो गया, तुम्हारा बोली ऐसा हो गया, तुम्हारे सामने सुनने वाले ऐसे हो गए, उनसे जो आगे परकोलेट हो रहा है वो भी वैसा ही हो गया. सो इट सफर्स फ्रॉम, टेक्निकल एनालिसिस ले लो, इट सफर्स फ्रॉम अ लैक ऑफ इमेज. आई कैन गिव यू अ 20-year forecast. And I will wager that it will come largely correct. For the past 20 years, I have been making a annual forecast. Yeah, I've seen that. At the start of January. मेरा ready है for the next year. 25 का ready है. अभी थोड़ा उसमें nuances मैं डालूंगा तो वो भी ready हो जाएगा. I would say if I have published it for 20 years, for 17 years it would have come accurate. And these are all built only on cycles. And I am doing them on January 1st, releasing it. अभी तो मैं टीवी पे भी आके बोलता हूँ उसको. पहला तो प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए ही था वो. So when something like this happens 17 times out of 20, then उस पर डिसबिलीव क्यों? बट बिलीव कोई नहीं लेता है. मेरे ऑफिस वाले भी नहीं करेंगे. वो होने के बाद आएंगे, बोले अरे हाँ वो इक्विनॉक्स में गिरा, अब तो सही बोले वो दिन, अभी अगला इक्विनॉक्स का भी है. That is what they will ask. Yeah. So yeah, then that makes sense because what, let's say now I was just going to ask that, and I was just telling this what you just said. Now I told one of my guy that sir used to make that annual forecast, and I've seen some of them, and it has been pretty accurate. And I'm going to ask that question. So now it comes, the main question is that what do you think? No, we don't want to go into specifics of it, but 2024 was quite a year in terms of
I also mentioned at the start of this year that this is a leap year and this is number 8 Shani ka number, and plus there are 2 elections which were there, because of which it didn't move as smooth as it was 23 or 22. Of course, there was a lot of movement. What do you see as 2025 as a year? How do you look at it as in terms of markets and sectors or anything specific? Gains are back-ended for 25. It's like divided into H1, H2. H1 is all going to be more difficult. H2 is going to be trended. That's the big First picture. 6 months and next 6 months. So therefore, you got to plan all this. I think we'll have the bottom of the year in March. And somewhere around the mid-year, May होवे, June होवे, July होवे, जो भी है, वहाँ से you will have a turn in the cycles, which will then lead into December. So this, when I made this in November, October actually, end of October, मैंने देखा कि जब वो जो correction extend होने लगा, so मैंने सोचा अभी बना लूँ rather than wait for December. This will keep running. What this does, it may come accurate, it may not come accurate. That is not the point. The point is, why do you go to an astrologer? To get a roadmap. Right. कि यार चलो अभी 3 महीना झेल लो, उसके बाद ठीक हो जाएगा. उसके बाद तुम्हारा ये चेंज हो रहा है और वो चेंज हो रहा है और ये दशा शुरू हो रही है और वो हो रहा है. What are you going to aim for? For a roadmap. So you do this cycle study thing like a roadmap. Now I have made this roadmap. मैं आपको एक sneak peek दे दिया कि क्या है वो roadmap. It helps me plan ना कि भाई अभी I have seen 26 on the index, तो वो 21-22 आ जाएगा. अभी 24 है, फिर समझो 23 आ गया, 22 आ गया, जो भी आ गया. Everything will look mouth-wateringly cheap. Some of them may be also. But the whole point is, stocks, just like gold, are worthwhile only if the price goes up. At least stocks have the advantage that they will give you dividend. Gold साला वो भी नहीं देता. So gold has only one value, storage, and in times of difficulty as a Exchange. medium of exchange. Otherwise it is useless. वो एक human kind का fascination है, वो अलग बात है. But stocks are still better than gold, that if they both don't move, इसमें dividend तो आएगा. अच्छी कंपनी है तो. To that extent you are better off. But they are both good only if the price goes up. अगर आपको ऐसा लगता है कि अगला 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी समय के लिए स्टॉक बहुत ट्रेंडेड नहीं होने वाला है, तो योर जॉब ऑफ मेकिंग बिग मनी फ्रॉम द मार्केट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. अभी डिफिकल्ट है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि नहीं बनेगा. आपका इंडिविजुअल बर्थ चार्ट भी चल रहा है ना, वो लक इधर वीनस है और उधर जुपिटर है, वो भी तो चल रहा है, तो आपका चलेगा उसके साथ साथ. बट द फैक्ट इज व्हेन यू नो दैट इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट. अब 12th स्टैंडर्ड में सब बच्चे लोग क्लास क्यों जाते हैं? वो एक it's a benchmark. It's a vital year which decides this way or that way. So for us in the market, will I make small money or will I make big money? That is one question. Will I stand to lose money? That is the other question which comes with it. अगर सामने पाथवे डिफिकल्ट है तो लूजिंग मनी का एक प्रोबेबिलिटी खड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सावधान रहो. डोंट गो ऑन एन एडवेंचर इन द मार्केट. 21, 22, 23 में तो पूरा एडवेंचर किया और पूरा सक्सेसफुल है. एवरीबॉडी मिंटेड मनी. 24 में भी खूब सारा पैसा बना टिल अक्टूबर. तो ठीक है, 4 साल से तो everybody has had fantastic thing. So in the sequence of thing, ज्ञान का plan of the decade में भी वो बोलता है कि 5th year of the thing will be a bullish one, but he never said whether January will be bullish or December will be bullish. And his plan of the decade cannot be taken to be exact. Yeah. It's in and around. वो 4th year of the decade में टॉप हो गया तो फिर क्या? 5th year सामान्य सा रह सकता है. 5th year बैक एंडेड में एकदम ब्लास्ट हो गया तो
वो ज्ञान का प्रोफेसी भी ठीक हो गया. Everything is possible because the market always is in a state of flux. Your mind is always in a state of flux. So when two items of flux collide, you're always going to have difficulty. When you are pre-warned कि यार ये समय इतना ठीक नहीं रहेगा for the market, तो तुम वैसा काम करो. तो it helps you in planning. अब 3 साल का बैलेंस शीट क्यों पढ़े? 8 क्वार्टर का क्लैरिटी दिखे तो क्यों इन्वेस्ट करे? आज के तारीख में फंड मैनेजर वही तो कर रहा है. मुझे 4 क्वार्टर का क्लैरिटी दिखे तो मैं इतना पैसा डालूंगा. 8 क्वार्टर का क्लैरिटी दिखे तो 2-3-4% ले लूंगा. उसके आगे देख लेंगे जो होता है. बिकॉज हिज लाइफ इज रनिंग क्वार्टर टू क्वार्टर. बिकॉज ही इज अकाउंटेबल क्वार्टर टू क्वार्टर. तो दे हैव ऑल्सो रीडिजाइन देयर लाइफ्स अलॉन्ग क्वार्टर्स, whether it is 2 or 4 or 8 or whatever. तो they are also planning along something which is time. अब ये सब चीज़ वहाँ पे क्लैरिटी है तो वो काम कर रहे हैं. आप इधर क्लैरिटी ले लो कि भाई आपके चार्ट के अनुसार ऐसे ऐसे साइकिल का प्ले आउट होने का संभावना है. तो इस संभावना के अनुसार मैं कैसे मेरा एक्शन को प्लान करूँ, बस इतना ही सोचना है. अब इसमें आप फॉलो करते जाएंगे तो कोई ना कोई सेक्टर उभर के ही आएगा. Sector is not going to become an overnight success. Sector play develops over a period of time. And when something is developing over a period of time, your higher top, higher bottom is enough. वो तो पैटर्न रिपीट करते ही जाएगा ना एंडलेसली. एंड फ्रॉम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स और टर्शरी ट्रेंड्स टू ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर ऊपर आते ही जाएगा. एंड दैट इज वाई वी हैव ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स. ठीक है, यू प्लॉन्क योर एवरेज देयर एंड गो. और यू मेक अ प्लान ऑफ एक्शन वेर यू से कि भाई ये अप ट्रेंड है, अभी एवरी डिक्लाइन आई मस्ट बाय. अच्छा, तो फिर डिक्लाइन को डिफाइन करो. उसका तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई टूल ले लो, फिबोनाची ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो. ये आया तो मैं ले लूँगा. अच्छा, उधर आए तो एक्शन पॉइंट के लिए आप एक रिवर्सल पैटर्न खड़ा कर दो. ये टाइम हो गया, ये हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये मेन मेरा फोरे हो गया और उसमें पुल बैक डिफाइन कर लिया, वो आ गया, वहाँ पर एक रिवर्सल खड़ा हो गया. वो कैंडल स्टिक ही क्यों नहीं हो, वो भी चल जाएगा. अब आपको खाली डिफाइन करना है कि वो वीकली में हैमर आना है कि 15 मिनट में हैमर आना है. दैट इज अप टू यू, डिपेंडिंग अपॉन योर एग्रेशन, द अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, द लेंथ ऑफ योर ट्रेड्स एंड सो मेनी थिंग्स. बस ये 4-5 चीज़ मोटा मोटा ध्यान रखे तो यू आर सॉर्टेड. अब ये सब क्या है, इसमें कोई मेथड तो आया नहीं. Will RSI give you the answer to all this? No. Will any method from technical give you an answer to all this? No. These are to be put together. तो न्यूएंस वाला बात इधर आ गया. तो योर स्केलेबिलिटी कम्स व्हेन यू गेट दिस. तो ये पॉइंट आने के लिए आपको अप्लाई किया रहना चाहिए. पिछले 5 साल आपने अप्लाई किया सब ठीक तरह से. यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, यू लर्न फ्रॉम योर विनर्स. वो एप्लीकेशन करने के लिए पहला एजुकेशन लेना था. तो एजुकेशन ठीक ठाक से ले लिए तो आपका ऑटोमेटिक आगे पॉइंट आना ही है. So that means there is a connection between astro and everything what we just Yes, completely absolutely. believe. I also believe. Is there any specific like I believe there are certain dates which is equinox, 2 equinoxes, and there are a couple of what we call as anniversary dates, which Yes. is basically the biggest crashes like 17th May or 28th October. What are your key dates when you look for that this is the market, this is the date when I'm going to be super alert or ready for some action? See, what are these dates? Whether you call them equinox or solstices or anniversary dates, they are all days of intense astronomical activity. Yes. We just give them names so that we can identify them more easily. So if intense astronomical activity is going to happen, like there is a big theory involving sunspots, and there are tomes and tomes written on sunspots, the solar flare-ups, how they impact. बहुत साल पहले I used to be a big fan of that and I have subscribed to newsletters and read and all that. फिर it became too much and our basic goal was to make money. तो बहुत ज़्यादा PhD नहीं करना था अपने को, रुपया भी तो कमाना है. But it is all there. So anything which produces an intense astronomical activity will have an impact in the market. Okay.
Now, whether June 4th was that, I have no idea. But we had intense activity in the market. Right? What we can do in a simpler way is we take, whether it is an anniversary date or whether it is an Amavas or a Poonam or it is something larger than that, we should look for significant turns around those days. A, they are primed to happen because of the astronomical events. I am making a distinction here between astronomical events and astrology. Logy is an interpretation. Nomi is an event which doesn't change. Okay? So, astronomical events which are happening, and then you bring it to the terrestrial level and see if there is a relatable incidence on your markets, on your charts. So, if you take June 4th as the recent big day, it's the biggest range day anyway, if you take recent times, what we do in our markets, we start all our measurements from there. अगर कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट करना है तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो, कोई साइकिल ही तो ढूंढ रहे हो ना. एक बॉटम टू टॉप ही तो एक साइकिल है. If you want to measure the time distance between x and y point, then again you take significant tops and bottoms. तो astronomical event जब होता है, and then it is a well-known event. And then we had some 3 red moons in the last month, right? When the moon is closest to the earth. We had 3 of them, which is, it's called some Hutchinson moon or something like that. I forget the name. So that is a non-normal thing. So you have to study what happens on that days and all that. When this becomes well known, then it has that prophecy wala the impact. अरे आज तो ग्रहण है, ग्रहण में ये सब होना चाहिए. क्यों? मेरा ग्रैंडफादर ने बोला और ये सब करते थे, ये करते, ग्रहण में बाहर मत जाओ, ये करो. तो बच्चा बोलेगा ग्रहण तो अफ्रीका में है, मैं बम्बई में क्यों नहीं बाहर जाऊँ? And nobody has the answer. So think like that. But then it is a fact. So prophecy भी उसमें कुछ आ जाता है. और वो प्रोफेसी को बिलीव करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, उनका एक्शन भी आ जाता है. सो एवरीथिंग बिल्ड्स अप, यू नो, एज अ सीक्वेंस, एंड दैट इज व्हाई ऑल दिस इवेंट, दिस इज माय बिलीफ कि एवरीथिंग हैज टू हैव अ बिल्डअप, एंड दैट बिल्डअप इज नॉट जस्ट वन थिंग. सुनामी भी ऐसे ही आके वेव आके गिर गया क्या? नहीं ना, वो ऐसा प्रलय की तरह वो बिल्ड करते गया फिर आके टूटा. सो इट्स ऑल wheels within wheels. And talking about this, one very interesting thing we have observed over the years is difference in men and women, how they approach trading and investing. Yes. And we've seen a lot of women. The ratio, of course, has changed a lot since the time, and it's only getting better. What would you say could be the reason for women turning out to be better traders? Women are intuitively much more stronger by physical construct and by the way they are made. Intuition is far higher in women than it is in men. And that power of intuition has been given to them for their own protection, because they are the weaker element between man and woman. So they need to protect themselves. Even today, just by the way that somebody is looking at you, you know that you got to be away. So intuition is a very highly built up trait in women. Most people don't even realize that. And the way society is programmed, it's actually frowned upon if a woman says intuitively कि नहीं, तुम उस आदमी से धंधा मत करो. You will put her down saying, क्या तुमको क्या मालूम है धंधे के बारे में? I know everything what is there. And then later on, somewhere down the line, you will know that day when she said this was right. So when you are intuitively better or built that way, you can spot more patterns in the environment. And the greater the number of patterns you are able to spot,
and you develop an ability to join them, the more life is visible to you. And that is why they make for better traders. They make for very good analysts. Now, unfortunately, our society is built in such a manner that to give vent to this or to support this to become more, it's not there. But if you have a supportive family, if you have a supportive spouse, if you have a supportive environment, all this can happen because inherently the greater power of intuition which lies within women. That I believe is the reason. So today women are getting released because the wealth level has gone up, right? So if the wealth level has gone up, you're freed from so many of your other chores, which otherwise would occupy your whole day. And concomitantly so many things are happening. ये सारे जो सुविधा बन गए हैं वो वुमन को एक छुटकारा भी दिया है कि वेयर शी हैज गॉट मोर टाइम. अब समय ज़्यादा होने से और एजुकेशन अवेलेबल होने से द स्टिग्मा दैट women should not go to school, college, वो नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए, ये सब जो स्टिग्मा थे वो सारे धीरे धीरे मिट रहे हैं, particularly in urban areas, but slowly it will percolate everywhere. See, even today in rural areas, if my daughter or my daughter-in-law has to go to work, it's a blot on me as a father or a father-in-law. It's a blot on me कि यार तुम्हारा बेटी का हाथ का कमाया हुआ उससे तुम खा रहे हो. Even today that is there. So it's a big battle ahead. तो वो जैसे जैसे हो रहा है अर्बन एरियाज में, as you get more time in your hand, as you get more facilities, आप आज अगर आप सोचते हो तो वो 4 काम आप कर पाते हो. अच्छा, ये भी एजुकेटेड है, आपके शोहर एजुकेटेड है, आपके चिल्ड्रन एजुकेटेड है, आपके फादर मदर in-laws हो या पेरेंट्स हो, they are educated, they are more modernistic in their outlook, तो you start getting more opportunity. And opportunity मिलेगा तो आपका जो innate quality है वो तो उभर आएगा ही. And that is why you are seeing this things which are happening today. Long road to go, Yeah. but still We have come a long way also Yes, from last indeed, few absolutely. years. I remember when we were in your class that time, and when we started our class in 2008, out of 100 there were like 2 or 3 women, and now there is almost like 20-25%, which is a Yeah, great yeah. jump, right? So I think we have a lot to talk. We can go on and on. So we'll do a part 2 some other time. That's okay. So we are coming to the last part of this podcast, and we have something called as rapid fire. Like we're doing this for the first time. So I have some questions which is like one word answer, and your choice. So let's start with this: technicals or fundamentals? Technicals forever. Okay. Price action or indicators? Price action. Okay. Then we have which is the best Western pattern: cup, rectangle, triangle. I would say a range because the breakout from it is very definitive. Range means rectangle. And best candlestick pattern. Best candlestick pattern, I would use a hammer or a shooting star because it comes at the end of a trend. And so that way it becomes more definitive. Okay. Swing, positional or long term? Here I would say all, depends upon how the chart unfolds. Everything starts off as a day trade, Everything starts with can convert. social media or television, or you can say none. Yeah, I am little bit old school, so not overly familiar with either. Television I have been part of, social media I am not. Spending time teaching or spending time looking at the charts? Well, I have looked at many charts, so teaching would be something that ultimately sharing whatever I have learned through the years. Algo or manual? Given the current situation, it has to go towards algo. So yeah, it was I think a great learning for us in last 2.5 hours, whatever we spent. And I would like to tell you that our journey of technical analysis has started with you. And this was I think 2002 or 2003 when I joined the first class.
and then she joined in 2006 when we got engaged. And we still think that whatever base we have created of technical analysis is with you. After that, we have learned from many people and many books and softwares and platforms and all that. But as you said, you rightly said at the start of the program, start of the podcast, is the base is very strong, which is the basics. And that's what I recommend my students also, कि वो basic trend line, moving average, channels, Fibonacci has to be very strong for you to go to the next, which you call the nuance level. Right. So once again, thank you so much for being part of our podcast and being part of our life and being part of our journey as human beings as well as traders, investors, and trainers. So thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much for this. And I must also say that, you know, you have carried forward the whole thing with almost a missionary zeal. And you are also giving back to people and training them the right way. I think kudos for that, because I think gathering information is very easy. Unless you make the effort, it does not convert into knowledge. But unless you apply the knowledge, it will never turn into wisdom. So you're taking people through that kind of journey where you're first giving them information, then you're sharing your knowledge with them, then you're assisting them in implementation so that they can carry wisdom. And once you get wisdom, it never goes away from you. Information can be lost, knowledge can be forgotten, but wisdom stays with you forever. That is a journey you both are doing very well. So congratulations, back to you on that. Thank you so much. Thank you. Wasn't that fantastic? इतना knowledge, इतना wisdom, इतना experience एक podcast में आपको सुनने को मिला. And I'm sure आपने बहुत कुछ सीखा. So नीचे मुझे 3 aha moments, 3 ऐसे ट्यूबलाइट moments जो आपको हुए इस podcast में मुझे comments में बताया, और ये भी बताए कि आपको अगले podcast में किन से बात करनी है, किन से सीखना है, तो हम उनको अपने स्टूडियो में अपने podcast पे लेके आएंगे. और दूसरा, डॉक्टर सीके नारायण जो वेटरन टेक्निकल एनालिस्ट है, उनके सारे हैंडल्स, उनका एक सॉफ्टवेयर है नियो ट्रेडर करके, जहां पे आपको बहुत सारी स्कैनिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, स्पेशली आरएसआई के बारे में भी बहुत कुछ है. सो मेक श्योर यू गो एंड चेक द लिंक एंड टेक अ डेमो ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, एंड इफ यू लाइक इट यू कैन सब्सक्राइब इट एंड फॉलो हिम ऑन Instagram, YouTube, Facebook, and follow all his wisdom. I'm sure you will learn a lot. Thank you so much, Dr. C.K. Narayan, and I'll see you, all of you, in the next podcast about wealth and beyond. Thank you so much.